Guys, welcome back to ATZ Sports. Thank you for stopping by for another big podcast video. And today I have Uncle Roy with me for reviewing India's performance in the recent concluded Asia Cup qualifiers. So, Uncle, first of all, welcome to the podcast. Thank you. Thank you very much for Obliged. Okay. So, Ankan, how was India's performance according to you? For not overall, आपको कैसा लगा कि आप हम लोग तीनों के तीनों मैच जीते हैं, टॉप किए हैं ग्रुप में हम लोगों ने AFC एशिया कप ग्रुप में. So, how's your reaction? बहुत दुखिया था क्योंकि हम लोग AFC चैंपियनशिप में जा रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये हमारा एक बेयर मिनिमम होना चाहिए. अगर हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई पहली बार भी नहीं, बेयर मिनिमम होना चाहिए जहाँ पे हम मतलब हर बार हमको पहुंचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. और इस बार का ग्रुप भी बहुत इजी था हमारे लिए, तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था. So we'll talk about each match, okay? क्योंकि हर मैच में कुछ तो कुछ interesting बात था. So first match we played Cambodia, जो weakest टीम था हमारे ग्रुप में, तो वहां पर हम लोग 2-0 से जीते. So of course there was a lot of issue इसके पहले कि हम लोगों ने friendly matches जो थे हम लोग हार गए थे सारे के सारे, including the one with ATK मोहन बगान. So after the 2-0 win, were you happy? Were you satisfied? तो आपको लगा कि हाँ हम लोग चांस से जीते, luck से जीते? What would you say? As a Indian football fan, I was not get more goals, but we didn't execute our chances. That's why we ended up 2-0. Otherwise, it could have. That's 2-0 win. We'll अब देखिए So 2-0 से हम अगर वहाँ पे जाकर 3-0 या 4-0 से जीतते तो लास्ट मैच में कंबोडिया के अगेंस्ट अगर जीतते तो हांगकांग के अगेंस्ट वो जो इक्वेशन खड़ा हो गया था कि हमको जीतना ही है. अगर हम ग्रुप इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि we should dominate the lower ranked teams. Okay, then we go to the second match. अफगानिस्तान के against जो था situation, हमेशा even though Afghanistan is ranked as a low team according to FIFA rankings, हमेशा जब हम लोग अफगानिस्तान से खेलते हैं तो it is very हम लोग we cannot win easily even though we should be winning very easily against them. So do you think the 2-1 win against Afghanistan shows that India still needs to improve against opponent like Afghanistan? क्योंकि I don't know why हम लोग अफगानिस्तान से हर बार जो है easy win नहीं पाते हैं. Okay, this time we had a 90+1 minute win against Sahar. So what's your reaction? What's happening when we play Afghanistan? मैं कोई बहुत बड़ा फुटबॉल एनालिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जो लगता है कि अगर कोई टीम इंडियन के अगेंस्ट बहुत फिजिकल खेलता है तो हम उसके सामने वो पासेस, बिल्ड अप प्ले, वो विंग प्ले, जैसे हमारे प्लेयर्स थोड़े उनसे फिजिकल में भी कम होते हैं. वो लोग बाहर के लीगों में थर्ड टियर सेकंड, तो वहाँ का जो फिजिकल प्ले होता है ये बहुत अच्छा होता है हमारे प्लेयर्स के मुकाबले. इसीलिए ये जो अफगानिस्तान है, ये जो जॉर्डन है, आगे है, बहुत फिजिकल प्ले खेलते हैं. इसीलिए मेरे को लगता है इनके सामने जीत पाना हमारे लिए. तो आफ्टर दैट आपको पता ही होगा, आफ्टर these 2 wins हांगकांग ने भी 2 मैचेस जीते थे. So the last game was India versus Hong Kong. जो of course we expected a tough match. Okay, हमें लगता था कि after Afghanistan performance we thought
मैच तो ड्रॉ करेंगे हम लोग, या जीते तो सिर्फ एक गोल डिफरेंस से जीतेंगे, लेकिन वी वन द मैच बाय 4-0। आपका क्या रिएक्शन है? इज दिस 4-0 विक्ट्री द बेस्ट विन फॉर इंडिया दैट यू हैव एवर सीन? आपको क्या लगता है? मेरे को 19 में जो हमने 4-1 से जो थाईलैंड को हराया था, वो मेरे को लगता है कि रिसेंट पास्ट मैच था, जीतने वाला मैच। अगर ओवरऑल देखे तो हम क्या था, वो भी एक बहुत अच्छा मैच था। ये हांगकांग तो हमारे सामने उस दिन खेल ही नहीं पाया। हांगकांग उस दिन खेल ही नहीं पाया। अगर खेल पाता, एक दो गोल कर पाता, तो हम उसको एक वन साइडेड मैच था। So, up first, okay. Now talking about the players, according to you, जो नए players थे, जो new, मतलब जो veteran players नहीं, like सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह, संदेश या veteran players, उन्होंने बहुत मैचेस खेले। जो नए players आए थे, okay, which player, you know, you gave you the most respect? Like आपको लगता है कि हाँ ये हमारे starting 11 में होना चाहिए ये player? Who would you say? I will name two. One is Roshan and another one is Anwar Ali. Because I think some time, because he was by so many people around the stadium. I think that he was so nervous. When he plays in the ISL, he plays more confidently on the ball. लेकिन वहां पे वो नहीं खेल पा रहा था ऐसे। तो मेरे को लगता है कि मेरे को जो सबसे अच्छा लगा कि वो अनवर का कामनेस। अनवर ये जो 3 मैचेस हुआ यहाँ पे, मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा जो डिफेंस में खेला है। हम सबसे कम गोल कॉन्सीड की इस टूर्नामेंट में क्वालिफाइंग हुआ। तो मेरे को लगता है कि सबसे जिसका जो श्रेय जाता है ये कम गोल कॉन्सीड करने का, तो अनवर को ये श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि मिडिल में वो फेल हो रहा था, वो he was limping around, he was not. So I think finding a center back like Anwar is a blessing for Indian football, because he can score. We need an or who can score with his foot. So will serve Indian football for more than 5 or 7 years. What about Roshan? Roshan was playing right back. उसका normal position मुझे लगता है left back था, लेकिन वो इस tournament के लिए right back खेल रहा था, because I think Akash Mishra was playing left back. So first of all, not his position. He was and even though he gave such a good performance at such a young age, आपको कैसे लगा? देखिए, रोशन एक ऐसा प्लेयर है कि उसको इसमें वो ऐसा विंगर कम राइट बैक जो भी खेलता है, वो उसको स्पेस चाहिए, उसका स्पीड बहुत अच्छा है। तो ये जो 2 मैचेस हुए, पहले 2 मैचेस, यहाँ पे उसको स्पीड, यहाँ पे उसका वो अटैकिंग, लेकिन जो 3rd मैच में उसका अटैकिंग प्ले था, हाउ ही पेनिट्रेटिंग द जोन, हाउ ही वाज क्रॉसिंग द बॉल, that shows his potential. Good right winger, good right wing back, rather I say. I was thoroughly impressed, and the capability of taking free kicks and corner kicks of Russian is Indian football. So of course these top players. So now of course Sunil Chhetri, even though 37, still scoring goals for the Indian national team, and he's currently 84 international goals for India. क्या आपको लगता है वो 100 goals पहुंच पाएगा before retirement? देखिए, हमको तो लगता है कि पहुंचना चाहिए, लेकिन सीरियस नोट पे वो मुझे लगता है कि उनको ये जो 2023 का जो एशियन कप है,
उनका लास्ट टूर्नामेंट होगा। मेरे को लगता है कि वो वहां पे इंडिया में फेयरवेल के लिए खेल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 100 गोल्स ऑन अ सीरियस नोट होंगे। He can might reach 94 is too far, I think. More than happy. Yes. So of course with that, लेकिन आपको क्या लगता है with सुनील, of course आप बोल रहे हैं let's assume सुनील छेत्री retires after 2023 Asian Cup, तो आपको लगता है कि कौन उसे रिप्लेस कर पाएगा? Like the other players who are currently at the moment जो स्क्वाड में है वो है मनवीर सिंह, highest goal scorer after सुनील छेत्री with just 7 या 8 goals, और ओवरऑल एक्टिव प्लेयर तो जे है, लेकिन वो इंटरनेशनल टीम छोड़ो, वो क्लब लेवल भी नहीं खेल रहा है, फ्री एजेंट है। सो आपको क्या लगता है कि once Sunil Chhetri goes, will the opportunities of scoring goals be, the goal conversion rate will fall down of India, or someone else will step up? Suddenly it will fall, but when the day goes, we will overcome the left by Sunil, because we have many talented players just like Manveer, Rahim Ali, and Ishan Pandit. We score with his back in line, so he got touch, he got the tiki-taka flavor in him. So I think we will miss him. Certainly we will miss him, but eventually we will get the number 9 position for India. So and क्या आपको लगता है कि and Ishan is my first pick to replace Sunil. I think Manveer is better when he comes as a substitute. तो आपको लगता है कि मनवीर की जगह कौन स्टार्ट करना चाहिए उस पोजीशन में? और एक बार बोलिए, सुनाई नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि कौन जो है मनवीर के जो पोजीशन है, आपने बोला मनवीर सब्स्टिट्यूट में बहुत कमाल करता है, तो स्टार्टिंग में कौन होना चाहिए मनवीर के पोजीशन पर? मनवीर के पोजीशन मतलब राइट विंग पे? हाँ, राइट विंग पे कौन होना चाहिए? राइट विंग पे आशिक मेरे हिसाब से सबसे अच्छा चॉइस है, क्योंकि जिस तरह से बॉल डिलीवर करता है, how he rushes through the defense, how he pierces the midfield and the center backs. Commendable quality. In the Afghanistan game, we saw that more than Sahal, I think the credit goes to Ashik, how he passes the ball him, and it was an deadly finish by Sahal, but the ball made by Ashik as well. So I think Ashik would be a good choice to replace the right wing. Okay. So now of course India has qualified, right? So at the moment जो है India जो position पे है, okay, draw में, okay, draw अभी तक नहीं हुआ. So India is in pot 4, okay, pot 1, pot 2, pot 3, pot 4 है. So India is in the fourth pot, लेकिन overall wise India is the highest ranked team in pot 4. So of course group top करने के chances तो बहुत कम है. लेकिन what do you feel? Do you think after seeing these recent performances, India will be able to give a good fight for maybe not win, लेकिन fight दे पाएंगे with the other teams? देखिए, अगर सपोर्ट होगा तो मेरे को तो लगता है कि चाइना में नहीं होगा। चाइना वालों ने उनको एफसी एशियन कप से सरेंडर कर दिया है। सऊदी अरबिया कहाँ पे होगा मुझे पता नहीं। तो अगर अरबियन कंट्रीज में होता है तो इंडिया के लिए हमारे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, इंडियंस बांग्लादेशीज रहते हैं। तो आई थिंक बीइंग ए साफ कंट्री, बांग्लादेशी
if we find the right combination, just like AFC Championship qualifiers, we will certainly do good because these players are playing for their pride, just as they were playing in front. They will play for their national teams in the AFC Cup as well. So I think 1 or 2 games might, or they might draw as well. So I'm thinking that they will qualify for the second round as a runner-up, not as a group champion, but runner-up is a possibility for them. Yes. So for those जो हमारे viewers है जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को पता नहीं है, and also for you अंकल, लास्ट टाइम जब टूर्नामेंट हुआ था एशियन कप का, तब इंडिया पॉट 3 में था and we were ranked as 97. Okay, of course with recent means not horrible performances but bad performances, we have dropped to 106. लेकिन जो after update 104 होने वाला है, ऐसा न्यूज़ है. So of course we are now dropped to pot 3. So I mean pot 4. So we are actually speaking the weakest team in any group. जो भी group होगा, we are the weakest team. So what do you see? देखो, आपको पता ही है कि top 2 teams qualify, direct qualification है. The third team जो है उसको best third team होना चाहिए from all the groups. So आपको लगता है कि there's chance for India to go to the next stage? I hope so. We 1.3 billion Indians hope so. And let's see how India plays in AFC Cup. So को लगता है कि एक बहुत रियलिस्टिक चांस है कि इंडिया पहुंच पाएगा अगले, because it's Sunil's last international tournament. So बाकी लड़के उसके लिए जान भी दे देते, जैसे मेसी पे. Yes, वो तो है. So tell me one thing, आपको पता है कि ग्रुप मतलब पॉट्स में कौन से टीम्स है, आपको पता है? जी नहीं, पॉट्स में अभी देखा नहीं. Okay, no issues. नहीं तो मैं आपको no issues, नहीं तो मैं आपको प्रेडिक्ट करने के लिए बोलता. It's no issues. बहुत समय है, 2023 है. इसके पहले एक पॉडकास्ट तो डेफिनेटली करेंगे हम. So overall wise, India does have tough opponents overall wise. लेकिन if we play well, जैसे हम लोगों ने ये ग्रुप हम क्वालिफायर्स में जो परफॉर्मेंस रहा था, in the previous qualifiers we couldn't even beat Bangladesh and Afghanistan. लेकिन इस क्वालिफायर्स में there was a very good performance. So of course मुझे तो बहुत positive feeling है इस after this tournament. So let's see कि भाई होता क्या है in the tournament, but mostly we want India to perform well. Yeah. That's so one motivation to grow our Indian football. So with this, With this, by the time the next tournament starts, we'll have one Duran Cup, one Super Cup, and one entire ISL season will be played. So the players will have ample amount of play time कि वो लोग जो है fit हो tournament के लिए. So hopefully they perform well. नहीं तो we don't want to go bad. Okay, जीत नहीं पाए, we couldn't go okay, लेकिन कड़ी टक्कर देना चाहिए हम लोगों को. लेकिन स्टिमैक ने तो कह दिया कि the players I will choose for the team should play for their clubs. So let's see what the club thinks. Yes, most likely जो players उसने choose किया है, okay, most all those players जो as of now squad में है, वो almost regular football खेलते हैं ना अपने टीम के लिए. मतलब not all matches of course, लेकिन बहुत regular है. Apart from maybe ईशान पंडिता, apart from क्योंकि वो he is a superstar player anyway. So last question, अगर आपको एक award देना है
for the best player of the tournament, किसी को आप दे सकते हो अपनी टीम हमारी टीम का, तो आप किसको देगा? सुनील भाई और किसको? The man with 84 goals. One or two behind Lionel Messi. That itself required a lot of passion to play football in his 37, and the volley he was taking in the Afghanistan match shows how the fitness level of this man is. So That's what. Top quality player, top captain, already considered Indian legend before even he can retire. So आप देख सकते हो कि उसका कितना जो है वैल्यू करते हैं लोग. So yeah, that's it. So thank you, Akan, for coming for today's podcast. It was very nice to talk with you. Thank you so much for coming. Thank you, and pleasure to have with you guys. Thank you. Thank you. So thank you guys for watching this video. If you have watched it till now, if you want to be in our podcast team, do contact me on Instagram. Thank you so much for watching this video. Do like, share, subscribe. See you on more videos coming soon in the near future. Goodbye. Take care. Stay safe.